Hello everyone, welcome to today's session where we are going to look at the poem Ice and Fire by Edmund Spenser. Dear student, it is a beautiful sonnet that conforms to the pattern of a traditional Spenserian sonnet. Dear student, if you want to know sonnet in details, then go to the link given above. So let's start our today's session. Before we take up a detailed analysis of this sonnet, let's have a look on the introduction to the poet Edmund Spenser first. The lifespan of the poet Edmund Spenser is from 1552 to 1599. He is regarded as one of the greatest poets of Elizabethan age. So, dear student, what is the period of Elizabethan age? So, the period of Elizabethan age is from 1558 to 1603. During the reign of Queen Elizabeth I in England. He was best known for his work, The Fairy Queen, an epic poem written in honor of Queen Elizabeth I. Dear student, Edmund Spenser is popularly known for his best work named Fairy Queen, which was written in honor of Queen Elizabeth I. He is characterized by English essayist Charles Lamb as the poet's poet or the poet of poets. It is very important from the exam point of view. This question is often asked in many exams as who named Edmund Spenser as poet's poet or the poet of the poets. His Fairy Queen and Shepherd's Calendar are among the best works of English literature. His collection of 89 sonnets named as Amoretti is also a glorious work. It is also very important from the exam point of view. The name of the collection of Edmund Spenser in which he wrote 89 sonnet is Amoretti. So now let's have a look on the introduction to this poem. This poem is the 30th sonnet in a sequence of 89 sonnets called Amoretti. As we have already discussed that Edmund Spenser wrote a collection of 89 sonnets named Amoretti, in which this sonnet is also included at number 30. So this is the 30th sonnet in this collection. It is a love sonnet that shows the sad plight of a devoted lover. This poem, Ice and Fire, is a love sonnet which shows the sad plight of a devoted lover. This poem shows the opposite states of hearts of the lover and his beloved. This sonnet shows the totally opposite states of the lover and his beloved. The lover finds his lady love hard-hearted and cold. He calls her heart frozen in the heart. So now have a line-by-line analysis of this sonnet. This poem is a Spenserian sonnet which consists of 3 quatrains or 3 stanzas of 4 lines each and a rhymed couplet of 2 lines. So let's start detailed analysis of this sonnet. So the first stanza of this sonnet is, I'm going to recite it, listen it attentively. My love is like to ice and I to fire. How comes it then that this her cold show greed is not dissolved through my so hot desire, but harder grows the more I her entreat. My love is like to ice and fire. Here, the poet using literary device simile. As we have already discussed in the previous session, that what is simile is? In simile, 2 totally different objects are compared to each other by the use of like as a so as. So here my love is compared to ice and I compare to fire by the use of like. So here by using literary device simile, the poet compares his beloved's unloving heart to ice and his loving heart to fire. You see that his beloved is like ice while he is like fire. Here the I is stand for the poet himself and his love is stand for his beloved.
named Elizabeth Boyle. It is also important that what is the name of the poet's beloved. So what is the name? Elizabeth Boyle. ठीक है, who continuously rejected Spenser as he was very much older to see. Okay, and also a widower also. So the poet says that my love is like to ice and I to fire by using of literary device simile. कवि क्या कहता है, माई लव, मेरी जो बिलव्ड है वो कैसी है, इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, और मैं कैसा हूं, एक आग की तरह हूं. ठीक है, आइस से मतलब भावना शून्य है, मीन्स उनके अंदर प्रेम की जो भावनाएं हैं वो नहीं है, और फायर से मतलब कवि का कि वो प्रेम की भावनाओं से भरा हुआ है. तो कवि खुद को कहता है कि मैं प्रेम की भावनाओं से भरा हुआ हूं प्रेमिका के प्रति, जबकि जो मेरी प्रेमिका है वो बिल्कुल आइस की तरह है, उसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है. आगे कहता है वो, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट इज नॉट डिजोल्व्ड थ्रू माई सो हॉट डिजायर. हाउ कम्स इट, द पोएट इज इन सरप्राइज, द पोएट इज इन the poet says that how comes it means how is it possible that this her cold means her coldness, her hatred for the poet is so great, means so big, is not dissolved, is dissolved means melted, affected, through means by the effect of, के प्रभाव से, my so hot desire means hot desire of my love, hot desire of my passionate love. The poet says that it is very important, it is very strange how it is possible. How comes it means how is it possible that her cold means her coldness, the coldness of the poet's beloved, the coldness of the heart of the beloved is not dissolved, means is not at all affected, is not at all melted through my so hot desire by the heat of his passionate love. The poet wants to say that he has a deep passionate love for his beloved, but his lady love is so hard-hearted and cold that she does not respond to his passionate love. How comes it means ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है देन दैट दिस आर कोल्ड, कि उसकी जो कोल्ड है, उसकी जो कोल्डनेस है, उसकी जो नफरत है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी नफरत जो है इज सो ग्रेट, इतनी बड़ी, इतनी महान कैसे हो सकती है, दैट इज नॉट डिजोल्ड, कि वो डिजोल्व नहीं हो रही, प्रभावित नहीं हो रही है, मेल्टेड नहीं हो रही है, पिघल नहीं रही है, थ्रू माई सो हॉट डिजायर, मेरी जो अत्यधिक डिजायर है, डिजायर मीन्स द फीलिंग्स ऑफ माई पैशनेट लव, जो मेरे प्यार की जो अत्यधिक गर्म भावनाएं हैं उससे भी वो नहीं पिघल रही है. तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जो कोल्डनेस है, उसकी जो नफरत है, इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, कि मैं उसके प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहा हूं, मेरी जो प्रेम की जो भावनाएं कितनी है, वो सो हॉट है, वो बहुत अधिक गर्म है, मीन्स बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शित कर रहा हूं. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी नफरत इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि मेरी वो भावनाओं से, प्रेम की भावनाओं से वो नहीं पिघल रही है. तो ऐसे कैसे हो सकता है. Normally what happens, the nature of heat means heat lessens cold, heat turns cold या ice in water. होता क्या है, नॉर्मली जो गर्मी है या जो हीट है वो आग को कम कर देती है या बर्फ को पिघला के पानी बना देती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर but what happens here, instead of becoming less cold, the ice of his beloved's heart is getting harder and harder. उल्टा हो रहा है. यहाँ पे होना ये चाहिए कि जो उसके प्यार की गर्मी से उसकी जो दिल की जो जमी हुई बर्फ है, जो कोल्डनेस है, उसकी जो नफरत है, वो पिघल जानी चाहिए, मीन्स वो इतना प्यार प्रदर्शित कर रहा है उसके प्रति, तो उससे उसकी जो नफरत है वो कम होनी चाहिए, बल्कि वो उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा. तो कभी आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है, बल्कि हो क्या रहा है, what happens, but harder grows the more I have entreat, harder grows more, the more means more and more I have entreat means pray, showing of love, my passionate love to her, showing of my love to her.
बट हार्डर ग्रोज, लेकिन क्या हो रहा है, हार्डर ग्रोज, वो और अधिक कठोर होती जा रही है। होना ये चाहिए कि मेरे प्यार की गर्मी से उसकी जो कोल्डनेस है वो पिघल जानी चाहिए, बल्कि हो क्या रहा है, बट हार्डर ग्रोज, लेकिन वो और अधिक कठोर होती जा रही है। द मोर, और अधिक, आई हर इंटरेस्ट, जैसे जैसे मैं उसके प्रति और ज्यादा प्रेम प्रदर्शित कर रहा हूं, यानी जैसे जैसे मैं उसके प्रति और ज्यादा प्रेम प्रदर्शित कर रहा हूं तो वो और कठोर होती जा रही है। मीन्स एज आई सो मोर एंड मोर लव टू हर हार्ट इज गेटिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर माई लव। होना ये चाहिए कि मेरे प्यार की गर्मी से उसकी बर्फ पिघलनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, उसकी बर्फ जो है और हार्ड होती जा रही है बजाय पिघलने के। So here the poet uses rhetorical device named rhetorical question. यहाँ पे rhetorical question का प्रयोग करते हुए कवि इस क्वार्टरन को लिखते हैं। तो what is rhetorical question? तो rhetorical question means एक ऐसा question which does not expect an answer. rhetorical question ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें जो आंसर की, उत्तर की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, इट इज जस्ट पोज टू मेक ए पॉइंट, कोई पॉइंट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। मींस ऐसे क्वेश्चन जिनमें कवि जो है उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो कवि यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज करते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जो कोल्डनेस है, उसकी जो नफरत है इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि मैं इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहा हूं उसके प्रति, फिर भी वो नहीं पिघल रही है, बल्कि हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, बल्कि वो और अधिक कठोर होती जा रही है। ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द क्वार्टरन ऑफ दिस सोनेट इज, आई एम गोइंग टू रिसाइट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डियर स्टूडेंट लिसन इट अटेंटिवली। Or how comes it that my exceeding heat is not delayed by our heart frozen cold, but that I burn much more in boiling sweet and feel my flames augmented manifold? Again, the use of rhetorical question. What are the rhetorical questions? Rhetorical questions does not expect an answer, and those are posed to make a point. Okay. Or how comes it that my exceeding heat, exceeding means excessive, surpassing, heat means the heat of my passionate love for the lady is not delayed means lessened or the affected by her heart frozen cold are here two means frozen in the heart means दिल में जमी हुई बर्फ या दिल को जमा देने वाली बर्फ। Here again the poet is confusion. He says that how comes it means how is it possible that my exceeding heat means that the excessive heat of my passionate love is not delayed, is not affected, is not melted by her heart frozen cold, means it is also remains unaffected by the heart frozen cold, means by the ice of his beloved's heart. Poet says that how is it possible that the excessive heat of his passionate love also remains unaffected by the ice of his beloved's heart? In the previous stanza, the coldness of beloved's heart is not affected by the heat of his passionate love, whereas in this stanza, the heat of his passionate love is also not lessened or affected by the heart frozen cold of his beloved. और हाउ कम्स इट, ऐसा कैसे हो सकता है दैट माई एक्सीडिंग हीट, कि मेरी जो एक्सीडिंग मीन्स अत्यधिक हीट मीन्स हीट ऑफ माई पैशनेट लव, मेरे प्यार की जो गर्मी है, मैं अत्यधिक जो मैं प्रेम प्रदर्शित कर रहा हूं उसके प्रति, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जो अत्यधिक प्रेम जो है इज नॉट डिलेड, वो डिलेड मीन्स लेसन, कम होना, वो कम नहीं हो रहा है बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसकी दिल को जमा देने वाली बर्फ के द्वारा या दिल में जो बरी हुई बर्फ है उसके द्वारा। पहले स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि मेरी जो प्यार की अत्यधिक गर्मी जो है बर्फ को नहीं पिघला पा रही है, बल्कि हो क्या रहा है, वो उसको और हार्ड कर रही है, और यहाँ पे उसका वाइस वर्सा उल्टा हो रहा है, जैसे उसकी जो बर्फ है वो मेरी अग्नि को भी कम नहीं कर पा रही, मेरी जो हीट है प्रेम की उसको भी कम नहीं कर पा रही है। पहले वाले में जो हीट थी वो बर्फ को नहीं पिघला पा रही थी और कठोर कर रही थी, और यहाँ पे जो आइस है वो जो उसकी जो एक्सीडिंग हीट है, जो एक्सेसिव हीट है ऑफ हिज पैशनेट लव, उसको वो डिले नहीं कर पा रही, कम नहीं कर पा रही है।
Okay, but what happens, you see that, but that I burning much more in boiling sweet. But what is happening, instead of lessening his heat of his passionate love, his heart frozen cold is what is doing. But what happens here he says, but I burn, means I am burning much more, means more and more in boiling sweet. Boiling sweet means sweet seems boiling due to the heat of his passionate love. उसका जो पसीना मानो उबल रहा हो, किससे, उसकी जो पैशनेट लव है उसकी हीट से मानो उसका पसीना उबल रहा हो। तो यहाँ पे कभी जो है जो बॉइलिंग स्वीट है यहाँ पे एक्सेजरेशन का प्रयोग किया गया है। हाइपरबोल एक लिटरेरी डिवाइस है। हाइपरबोल मींस एक्सेजरेशन, और कह सकते हो आप बोल्ड ओवर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कभी बोल्ड ओवर स्टेटमेंट, एक्सेजरेशन और हाइपरबोल का यूज करते हुए कहते हैं बॉइलिंग स्वीट मानो मेरा पसीना जो है उबल रहा हो और उसके अंदर मैं आई एम बर्निंग, पुट से दैट आई एम बर्निंग मोर एंड मोर इन द हीट ऑफ his passionate love, means his passionate love is increasing in spite of his cold behavior of his beloved. And he says again, and feel my flames. Flames means feel the hot love in me. Feel my flames means feel the hot love in me. Augmented means collected. Manifold means multiplier. Again the poet using the metaphor of ice and fire. He says that the flames of the fire of his passionate love have increased manifold. तो कहता है फील, महसूस करो माई फ्लेम्स, मेरी जो फ्लेम है, लपटे हैं, जो मेरी प्रेम की जो हीट है उसकी जो लपटे हैं मानो ऑगमेंटेड मीन्स कलेक्टेड हो गई हो, मैनिफोल्ड मल्टीप्लाई टाइम है, बहुत अधिक गुना में, मीन्स मैं प्रेम की गर्मी मानो इकट्ठी हो गई और उनकी लपटों में मेरा पसीना जो मानो उबल रहा और उसके अंदर मैं जल रहा हूं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको। और हाउ कम्स इट, ऐसा कैसे हो सकता है, दैट माई एक्सीडिंग हीट, मेरी जो अत्यधिक गर्मी है यानी मेरे जो प्रेम की अत्यधिक गर्मी है, इज नॉट डिलेड, वो कम नहीं हो रही है, बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसको जो दिल की जमी हुई बर्फ है या जो दिल को जमा देने वाली बर्फ है उसके द्वारा, यानी उसकी जो बर्फ है, होना क्या चाहिए बर्फ, व्हाट इज द नेचर ऑफ आइस, इट स्टिंगाइज फायर। ठीक है, बट हियर it has no effect on his heat, but that I burn much more in boiling sweet, बल्कि हो क्या रहा है कि वो उबलते हुए पसीनों में मानो वो जल रहा हो, यानी उसकी जो प्रेम, इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहा है कि मानो वो उसकी हीट के अंदर उसके पसीने मानो उबल रहे हो और उसके अंदर मानो वो जल रहा हो। और वो कह रहा है कि फील माई फ्लेम्स, और महसूस कीजिए कि मेरी जो लपटें हैं, मेरी हीट की जो प्रेम है उसका जो पैशनेट लव की जो हीट है उसकी जो फ्लेम्स है मानो वो ऑगमेंटेड मैनिफोल्ड, वो मानो बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो गई है, मीन्स बढ़ गई हो, यानी उसका प्रेम उसके प्रति बढ़ता जा रहा है, और लेकिन फिर भी जो है वो उसका जो दिल है वो उसके प्रति नहीं पिघल रहा है। सो द लास्ट क्वार्टर और द स्टेंजा ऑफ दिस सोनेट इज, what more miraculous things may be told, that fire which all thing melts should harden eyes, and eyes which is congealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device. The poet again uses the rhetorical question here. He says that what more miraculous things may be told. Miraculous means of great miracle, marvelous. What more miraculous things may be told means what stranger things can I say, means there can't be anything more miraculous than this. इससे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या हो सकती है। What more miraculous means इससे ज्यादा चमत्कारिक थिंग चीज में भी टोल्ड कही जा सकती है, यानी इससे ज्यादा अजीब या आश्चर्यजनक चीज मैं क्या कह सकता हूं, यानी इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात कुछ हो ही नहीं सकती। कौन सी वाली बात, दैट फायर विच ऑल थिंग मेल्ट्स, मेल्ट्स माने डिसॉल्व करना, अफेक्ट करना, पिघला देना, should harden eyes. The poet says that it is very surprising thing that the heat of my passionate love, instead of melting the ice of his beloved's heart, should make the ice of her heart harder. मतलब इससे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या कहूं मैं, या इससे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या कही जा सकती है, दैट द फायर, so the quality the nature of fire is melting all things, which all thing melts, जो सारी चीजों को
मेल्ट कर देती है, पिघला देती है, यानी वो आग जो सारी चीजों को पिघला देती है, शुड हार्डन आइस, तो क्या उसको आइस को कठोर करना चाहिए। यही हो रहा है कि उसकी जो प्रेम की आग है वो उसकी बर्फ को पिघलाने की बजाय और अधिक कठोर कर रही है। तो इससे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या हो सकती है कि मेरे जो मतलब जो आग है जो सारी चीजों को पिघला देती है वो आइस को कठोर कर रही है। एंड फायर विच इज congealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device and ice. And ice which is congealed means frozen, जो जमी हुई है, with senseless cold means having no sensation, means her heart is so cold that it appears to have no sensation. Should kindle fire means produce fire by wonderful device, means by strange way. So the quality or the nature of ice is to extinguish fire, but here it is producing fire instead of extinguishing it. And ice, he says that the ice is जो बर्फ है which is congealed, जो जमी हुई है, with senseless cold, भावना रहित ठंडेपन से, यानी एक ऐसी बर्फ जिसके अंदर, यानी एक ऐसी नफरत जिसके अंदर कोई भावना ही नहीं है, यानी मेरे प्रति कोई भावना ही नहीं है, जो जमी हुई बर्फ है एक तरह से। शुड किंडल फायर, तो क्या उसको वो आग को उत्पन्न करना चाहिए। किंडल मीन्स प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, तो क्या वो आग को उत्पन्न कर सकती है बाय वंडरफुल डिवाइस, ये एक बहुत ही अजीब तरीके से, बाय स्ट्रेंज वे, अजीब तरीके से। दोबारा देख लेते हैं। व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग्स मे बी टोल्ड, इससे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या कही जा सकती है, या इससे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या हो सकती है। दैट फायर, जो अग्नि, विच ऑल थिंग मेल्स, जो सारी चीजों को पिघला देती है, शुड हार्डन आइस, कि उसको आइस को हार्ड करना चाहिए। एंड आइस, और वो बर्फ, विच इज congealed विथ सेंसलेस कोल्ड, जो भावना मीन्स भावनाओं से रहित जो कोल्डनेस है उससे जो जमी हुई है, शुड किंडल फायर, क्या उसको आग को उत्पन्न करना चाहिए बाय वंडरफुल डिवाइस, अजीब तरीके से। ठीक है। सो द लास्ट टू लाइन्स आर द राइमिंग कपलेट ऑफ दिस सोनेट। सो द कपलेट इज such is the power of love in gentle minds that it can alter all the course of kind. Here the poet describes the power of true love. He says that such is the power, means this kind is the power. This kind, what kind of this means vice versa qualities of things. As the nature of ice is to extinguish fire, but here it is producing or kindling fire. And the quality or nature of heat or fire is melting things, but here it is hardening ice. Okay, so this is the power, such kind of power of love in gentle mind. Gentle mind means kind-hearted people, that it can alter means can change all the course of kind. Course of kind means normal order of things. Means poet says that all these miraculous matter. What are the matters? That ice is kindling fire, and the heat is hardening ice. So all these miraculous matter is because of the power of true love in gentle minds. The poet says that the power of true love in gentle minds can change the whole course of kind, means it can change not only the nature of ice and fire, but also all the course of universe. Such is the power, इस तरह की शक्ति होती है of love, सच्चे प्यार की, in gentle minds, जो काइंड हार्टेड पीपल्स होते हैं उनकी सच्चे प्यार की शक्ति ऐसी होती है दैट इट कैन अल्टर, जो अल्टर मीन्स चेंज करना, बदल देना, जो बदल देती है ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, यानी सारी चीजों का जो ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर है, उसको चेंज कर देती है। आग का ऑर्डर क्या है कि वो सारी चीजों को पिघला देती है, लेकिन यहाँ पे वो हार्ड कर रही है इसको।
और आइस का काम क्या है कि वो हर चीजों को जमा देती है, लेकिन वो यहाँ पे आग उत्पन्न कर रही है। तो इस तरह से सच्चे प्यार की शक्ति होती है, जो चीजों की जो जो ब्रह्मांड की सारी चीजें हैं उनका ऑर्डर को वो चेंज कर देती है। So this is the analysis of this poem. We have already discussed the figure of speech used in this sonnet during the analysis. So now let's have a look on the introduction and the rhyme scheme of the sonnet. The poem Ice and Fire is an Spenserian sonnet, consists of 3 quatrains followed by a rhymed couplet. In the stanza, the poet expresses his idea and develops it, while in the couplet, this idea is concluded. The rhyme scheme of this sonnet is Spenserian sonnet, where it is so. We have already discussed in the previous session in the topic sonnet. It's the rhyme scheme of Spenserian sonnet. What is AB AB BC BC CD CD EE. So this is the detailed analysis of this sonnet. Dear student, hope you enjoyed this session. We look forward to meet you again in the next session. In the very next session, we will discuss important explanations from the exam point of view. Thanks for watching. Thank you very much.